Hello, all. Welcome to my interview podcast show. Today, I have a wonderful guest whose life journey is an inspiration, is a determination, strength of hard work and persistence. He has so many degrees to his cap that the introduction will be very less. He has, I can go endless talking about him. So let's hear it from him only. I have one of the best clinical hypnotherapists and a medical neurologist, Dr. Vevek Mantri, sir. So welcome to this podcast. First of all, good morning to Krishnaveni and good morning to every one of you who is watching this podcast. If you are watching it in afternoon and evening, then good afternoon and good evening. सभी लोगों को नमस्कार. First, thanks to Krishnaveni for welcoming me on this podcast. मैं अभी 1 मिनट के लिए सोच रहा था कि मेरे सिर पे तो कैप नहीं है तो डिग्रीज कहाँ से आ गए ना डिग्री है ना कैप है. Sir, But you're itself a degree, so many knowledge, so many achievements you have. So that I is want to God's hear it grace. from you itself. What are the degrees that you hold and how special they are? To start with, I'm an electronics engineer. Graduated in 1995. I was the engineering topper of my college. Then I started my journey in electronics and research and development for the sales. And for almost 23 years, I was working into electronics. I enjoyed my life to the core, right from a junior engineer to a senior R&D manager and junior salesperson to the level of country manager. I have seen all the journeys in research and development and sales. It was an amazing journey. Life has been always grateful to me because for me, it's always about if you see the opportunity, if you see anything as an opportunity, life becomes interesting. Instead of seeing it as a challenge, see it as an opportunity, and life is an amazing journey. क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था कि challenges नहीं थे when I was an R&D engineer. Daily challenges, उसके बगैर R&D होता ही नहीं है. But it's an opportunity. Same was in sales. And then one fine morning in 2013, when I was taking my shower, my leg slipped in the bathroom and my neck got hit on the commode. And फिर गर्दन टूट गई 3 हिस्सों में. तो फिर उसके बाद जर्नी अलग शुरू हुई. I am fitted with 4 screws, 2 rods, 2 clamps inside the neck. Post surgery, my doctor said either you be on the medicines for the lifetime or it is your choice to change your state of mind. When did this happen, sir? This This incident? When happened in December 2013. So it's almost like 10 years now. But then, 10 years. yeah. And after that, I started working on neurolinguistic programming, hypnotherapy. So that changed me completely. I could stand back on my feet. And when I realized that if I can stand, why I can't enable others? उसी जज्बे को लेके मैंने अपने इंजीनियरिंग लाइन को 2 साल में टाटा बाय बाय कर दिया. Parallelly, I was taking my workshops across India. Still, I conduct my workshops for army, doctors, and even for common people. पहले खुद पे अप्लाई किया, फिर दूसरों को Yes. सिखाना शुरू किया, and I'm very happy that most of my students who have learned NLP, hypnotherapy, and various mindfulness programs from me are really living happy in their life. So journey for me, my journey is my students' journey and my patient's journey. जब वो खुश होते हैं तो वो Yes. मेरे लिए अचीवमेंट है. मैं खुद चाहे जो भी करूँ या चाहे आज जो भी हूँ, it's because these people have seen the differences in their life, so I am seeing the difference in my life. ये छोटी सी जर्नी है. That is how the purpose of life goes on. कि जब हम अपने आप पे implement करते हैं और हमें रिजल्ट दिखता है, we want that to be given to people so that वो साइंस अपने तक ना रहे, we spread to the people. Because आजकल क्या हो रहा है, the awareness, sciences are so much, people can benefit so much, but the lack of awareness is keeping people deprived of these sciences. What do you think about this, Vivek, sir? Absolutely, awareness is very important. Whenever we have to achieve something in life, most important thing is being aware, and being aware even about not even about the subject matter or not even about what you want to do, but सबसे पहले अवेयरनेस खुद का होना चाहिए, जिसको मैं हमेशा माइंडफुलनेस कहता हूँ. In my training programs also I try to teach. First, be aware about your mind,
बी अवेयर अबाउट योर बॉडी, एंड इतना जब आप थोड़ा भी अचीव कर लेते हो ना इसमें, तो हाफ ऑफ योर जर्नी इज कॉन्कर्ड. Rest of the things, rest of the skill sets you can acquire anywhere in the world. बट पहले अवेयरनेस अंदर का होना चाहिए, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सिस्टम एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड. अवेयरनेस, बाहर की दुनिया का अवेयरनेस तो हमको स्कूल में सिखाया जाता है, Yes, कॉलेज में जाके सीखते हैं. बट खुद का अवेयरनेस खुद के अंदर होता है, जो 90% ऑफ द पीपल टेंड टू इग्नोर इट, दैट व्हाट योर बॉडी इज टेलिंग, व्हाट योर माइंड इज टेलिंग. तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तक अवेयरनेस नहीं है तब तक कुछ नहीं है. तो सेल्फ अवेयरनेस is most important. yes, self-awareness is most important. Yes. And as you said that one incident changed your life so much. How was you? Did it change you as a person? Did your perspective change towards life? How were you as a person before that? And after, how it has changed you as a person? Okay, a very interesting question. Me as a person has not changed even 1%. Reason, I was an hardcore electronics and R&D engineer. So always I had a perspective to go deep inside the things without analyzing, without seeing the things, don't come to the judgment. तो वहाँ चेंज नहीं हुआ. चेंज जो हुआ वो मेरे अप्रोच में हुआ टुवर्ड्स लाइफ. प्रैक्टिकल जो है सब कुछ है, बट लाइफ में एक चेंज मेजर हुआ कि accepting the things as they are. Because earlier, like before my surgery, I used to drive twice or thrice a week to Pune, Mumbai by my own car. Surgery के बाद वो कब सब कुछ हो गया. That itself was a big shock to me because driving was my passion. भले मैं बहुत लेट सीखा ड्राइविंग. I learned driving in 2010. बट उन 3 सालों में मैंने अपनी लाइफ ड्राइविंग की जो थी वो पूरी ख्वाहिश पूरी कर ली. उसके बाद जब ड्राइविंग नहीं आने वाला है या नहीं कर, बिकॉज माई नहीं नेक कर डजंट मूव दिस साइड और दिस साइड, so it's हम्म, straight, so I can't risk other people because of me. तो वो अवेयरनेस एंड वो एक्सेप्टेंस लाना वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट था. सेकंड एक्सेप्टेंस मेरे लिए उस समय सबसे पहले आया था कि व्हेन आई एम लाइंग डाउन, my I have to lie only straight. I can't turn left or I can't turn right क्योंकि नेक पूरी लॉक हो चुकी है. So that itself was also a big time acceptance for me कि इसको accept कर दो mind में. And once that acceptance happened, then it gave me a new perspective towards the life कि accept कर दो चीज़ों को. जब accept कर लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है. तो वो वहाँ पे एक मेजर चेंज आया. बट जो मेरा जो inner quality है to analyze, to get into the root cause, that is always there. बट ओवरऑल लाइफ का पर्सपेक्टिव ये चेंज हुआ. डोंट ट्राई टू आइदर, बहुत ज्यादा उसको शो ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है और क्रिप करने की भी जरूरत नहीं है. इफ वी ट्राई टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, लाइफ रियली बिकम्स इजी, नो मैटर एट व्हाट ग्राउंड लेवल यू आर. इफ यू एक्सेप्ट इट, थिंग्स चेंज. बट प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है, या मेरे साथ भी हुआ था उस टाइम पे, कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना मुश्किल. पा रहा था. हाँ, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था. बट वंस पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग, तो फिर नए रास्ते खुलते हैं, विवेक वरना जी, नए दैट रास्ते इज नहीं लाइफ, खुलते हैं. राइट? दैट इज लाइफ. लाइफ कभी स्मूथ नहीं होता है फॉर एनीबडी. अप्स एंड डाउन्स. वन इंसिडेंट माइट चेंज समबडीज लाइफ. अप्स एंड डाउन्स. जैसे आपने एब्सोल्युटली. बोला, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी शॉर्ट वाइल बिफोर यू हैड सो मच ग्रेटिट्यूड एंड यू सेड लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी. लाइफ, आई हैव सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड. So that feeling Absolutely. shows the kind of person you have been shaped up by that incident. It has changed you for better. Can we say It has that? changed. It has changed my life for better because life is not about ups and downs, but it's about mountains and valleys. Hmm. माउंटेन्स आपको दुनिया दिखाता है ऊपर चढ़ने के बाद, वैली और आपको वैल्यूज. नीचे की ब्यूटी दिखाती है, what जी. exactly you are able to see at the ground level. So everyone who is watching this podcast, always I would say that don't term your life as ups and downs. See it as mountains and valleys. Mountains are beautiful, which shows you the overall perspective, and valleys show you the ground level reality. Very तो rightly वो said. And सिखाने को बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिलता है. अप्स एंड डाउन्स कभी मत करिए, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो आपको नीचे की तरफ लेके जाता है. योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग एज कि अप्स मतलब राइज एंड डाउन्स मतलब डाउनफॉल. माउंटेन्स एंड वैलीज देखो, लाइफ विल चेंज इमीडिएटली. wonderfully said, Vivek ji. Very wonderfully said. I think people have lots to learn
with our conversation, they can implement in their daily lives, because each life is an inspiration. As you are a clinical hypnotherapist also, do you think the kind of awareness in India about hypnotherapy is very less, or it is growing with time? Clinical hypnotherapy, slowly it's growing, but the problem is hypnotherapy, there are lots of myths about hypnotherapy. Yes, And that's what I want. for which most of the times our Hindi films or any movies are responsible. Like they show that the hypnotherapist is doing something and doing something bad. So first of all, everyone who is watching this, hypnotherapy doesn't do any such things. Because what happens is, suppose if you get into the trance, no matter what, suppose if some therapist has a bad, वैसे तो किसी therapist का कभी गलत intention हो ही नहीं सकता है. But suppose if someone tries to do anything against your wish, practically your own morals and your subconscious mind doesn't allow it to happen. Like बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं ये मेरे सीक्रेट्स निकालेगा, मुझे कपड़े उतारने को बोले तो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है. That's what people have the perception हाँ, about ऐसा कुछ hypnotherapy. नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है. Let me put it very clearly, because once our subconscious mind is strong, once our morals are strong, no matter how much trance you get into, for example, trance के भी 3 levels होते हैं, light trance, medium trance and deep Medium trance. trance. Yes. आप डीप ट्रांस में भी जाते हो तो भी सपोज अगर आपसे कोई गलत काम करने को कहे तो 99.99% वो नहीं हो पाता है. सेकेंडली, अवेयरनेस अबाउट हिप्नोथेरेपी, उसके लिए लोग भी जिम्मेदार है. एंड टू सम एक्सटेंट नाउ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड supporting us. Like I myself, I'm a district secretary of a global hypnotherapy association, and our association बीच में 4 तारीख को हमारा जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ, उससे पहले ही हमको हमारे आदरणीय मोदी जी ने ऑफिशियली ईमेल पे भेजा है लेटर दैट वी आर डूइंग गुड थिंग्स एंड ही हैज अश्योर्ड अ कंप्लीट सपोर्ट टू अस. ऑफिशियली मोदी जी की तरफ से जब ये मेल आता है तो वी फील दैट वी Yes. आर डूइंग समथिंग गुड. Yes. अब हिप्नोथेरेपी का अवेयरनेस, तो यहाँ पे दिक्कत एक आती है कि लोगों को लगता है कि अरे बड़े बड़े डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए, हिप्नोथेरेपी कैसे होगा. Yes. Yes. तो That's a लेट मी wrong क्लियर द perception मिथ. people हाँ, have. दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन. बेसिकली हिप्नोथेरेपी मतलब क्या होता है बताता हूँ. हिप्नोथेरेपी कम्स फ्रॉम 2 words. हिप्नोस मीन्स अ डीप अच्छा. स्लीप and therapy means a process. So what happens is your subconscious mind, once you go into the deep sleep, your subconscious mind knows everything whatever is happening. Yes. And then whatever beliefs, whatever patterns, whatever things which are not solving your purpose, you can actually re-imprint a new thought, new belief system, and then things start getting work, then things start getting better. So hypnotherapy can be used for your betterment, whether it's your personal life, professional life. बड़े से बड़े हेल्थ इश्यूज भी हिप्नोथेरेपी से काफी हद तक ठीक होते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड स्टॉप योर मेडिसिन, Hmm. but along with medicines, These things. 100% you should take hypnotherapy. Now again, where hypnotherapy can be 100% beneficial, neurotic disorders, stress, anxiety, चिल्लाना, stress से related बाकी health issues, psychosomatic health issues, 85% of the health issues happening to any human being are psychosomatic. अभी like in 1957 hypnotherapy was first used in dentistry. अभी इंडिया में भी डेंटिस्ट्री के लिए हिप्नोथेरेपी यूज होने लगी है. Second biggest application which is happening for hypnotherapy is painless delivery. Anesthesia की जरूरत ही नहीं पड़ती है. Take a person to a hypnotic state and the delivery happens because body can actually help you to release the baby once, Hmm. because वो pain रहता ही नहीं है, and pain doesn't Yes. exist. Pain is a feeling. Hmm. So hypnotherapy can be used. Then again in your daily life it can be used wherever you want. तो दोस्तों मैं सबसे यही कहूँगा कि ऐसा कोई मिथ मत रखे कि हिप्नोथेरेपी से कुछ गलत हो सकता है, गलत होगा. ऐसा कभी भी नहीं होता है. विवेक जी, यही एक रीजन है जिस वजह से लोग हिप्नोथेरेपी की तरफ आ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज I would I उसके would I would add one more thing in this, कि जब आपने कहा कि लोग नहीं आ पा रहे हैं तो सभी से मैं ये कहूँगा 25 November 2002 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली हिप्नोथेरेपी को अप्रूव किया है जी. that you can use it as an alternative medicine, हम्म. alternative therapy
for enabling your life. And secondly, उसमें ये भी लिखा गया है that you need not to be a psychiatrist, you need not to be anything. As a therapist, individually you can practice and no one can challenge you. Hmm. क्योंकि लॉ ऑफ इंडिया ये कहता है कि as long as you are not inserting any medicine in Anybody. anyone's body, Yes. you are not asking anyone to stop any medicines, you are not doing anything wrong. So Yes. if of course, if a therapist has a bad intentions, if then he can't be a good therapist. Good therapy. Then he is like a uh, wolf in the sheep's clothing. So here the thing comes when somebody is looking for a hypnotherapist after watching this, or they get the awareness if somebody's problems can be solved. First thing they should do is search for a proper certified clinical hypnotherapist, Yes, and they can reach out to you also. Of course, I'll share absolutely. the Yes, details. And here I wanted to ask one thing. As you said, case stress, anxiety, psychosomatic diseases. These are the most common problems these days among youngsters, among middle-aged people, even among children. The sense of anxiety is more with lot of gadgets and other things. How hypnotherapy can help in this for children and and the young people? basically our mind always runs in four states: beta, alpha, theta, and delta. Beta state is like 14 to 30 hertz frequency, where you are completely aware. Like you are right now talking to me, people who are watching, they are completely into the beta state. Then comes the alpha state, which is like calming down the brain frequency. Then comes theta, and then comes delta. Yes. So most of the people who are completely stressed, they are always into the beta state, where their mind is continuously fluctuating every now and then, because it can be because of stress, it can be because of the peer pressure, it can be anything. And आजकल लोगों को स्ट्रेस लेने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए. कुछ हाँ. नहीं मिला ना, आई हैव सीन Stress. पीपल इन माय थेरेपी, एंड मैं बकायदा सबसे फॉर्म भर के लेता हूँ बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर. Standard procedure. आई हैव सीन पीपल कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, इस बात का भी स्ट्रेस होता है. ऐसे जी. भी लोग आते हैं. आते तो हैं. स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब दूर करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, awareness is most important. Once you are aware about a problem, you can find a solution. But लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं, सॉल्यूशन पे नहीं करते. सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते. इफ यू फोकस ऑन द सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच, 99.99% यू विल गेट द राइट सॉल्यूशन. प्रॉब्लम पे फोकस करने से क्या होता है, एक प्रॉब्लम पे फोकस करने से दूसरा प्रॉब्लम सामने आ जाता है, एंड दैट्स वेयर द स्ट्रेस इंक्रीजेस. That's where the problems arise. I'm not saying that you should ignore the problems. Problems को देखो, but उसको बहुत ध्यान से एनालाइज करके उस पर काम करना चाहिए. लाइक इंग्लिश में एक सेइंग है, नो वुमन इज लिटिल प्रेग्नेंट. इफ शी इज प्रेग्नेंट, शी इज प्रेग्नेंट. Similarly, if there is a problem, there is a problem, you can't avoid it. बट उसी प्रॉब्लम पे बैठ के अगर आप काम करते बैठोगे तो यू विल नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन. इंस्टेड ऑफ दैट, हैव अ सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच. धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म होती है. Yes. एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका अगर आप करते हो तो मेडिटेशन. सबसे होता नहीं है हाँ. तो, बट एटलीस्ट अगर आप 5 मिनट के लिए, forget about meditation, but even if you focus, sit straight and very slowly start counting down from 100 to 1 with a very relaxing frequency. For example, this way: 100, 99, 98. You'll slowly start feeling that relaxation in the body, and I guarantee you, by the time you come 50, the count of 50, you'll experience that your entire body is lighter. इसको अगर आप रोज 5 मिनट भी करते हो ना, तो भी आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. हेल्थ इश्यूज, मेजर हेल्थ इश्यूज को कवर किया जा सकता है. बट दिस डजंट मीन दैट यू शुड नॉट गो टू अ मेडिकल डॉक्टर और यू शुड मेडिकल नॉट गो डॉक्टर. यस. थेरेपिस्ट. थेरेपिस्ट, अब यहाँ पे दो चीजें होती है. थेरेपिस्ट का मतलब क्या? क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट. Clinical hypnotherapist is a person who is going to help you to understand your problems, which are at a deepest rooted level, work out on it, re-imprint a new belief pattern, and then help you to see a new life. Like मेरे पास भी patients आते हैं, आप like so this way therapy works.
Therapy is all about getting into the deep-rooted things. Deep-rooted, yes. Thank you for sharing this insight, Vivekji, because this will definitely help people who are watching this. And please do the remedies which is shared by Vivekji. One more common thing is OCD problem these days. As I also do Vastu, 2, 3 people came to me for this particular problem. OCD. Why is this becoming more common? Even children also having, and especially middle-aged ladies. What do you see? Is this people say it is a mental problem or it is an obsessive problem? There is a lot of confusion regarding this also. If you can show some Yes, your absolutely. insights on this. Absolutely. Just give me 1 second. I'll tell you something. Basically, OCD, obsessive compulsion disorder. Yes. It means that a person feels continuously to do certain things. Does it come from the childhood or it can start from after a few years, like 10 years or 15 years? उसके बाद आता है कि बचपन से होता है? There are various patterns for OCD. We'll start with the basic pattern of OCD, how it happens. OCD and ADHD ये आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं. Yes. अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर. हम्म जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है इन 4th और 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो बच्चे का फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होना शुरू होता है. फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टोर्स ऑल योर मेमोरीज एंड एवरीथिंग. अब यहाँ पे सपोज अगर वो माँ स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, या with due respect to all the females, कुछ लेडीज क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, फ्लैशी इमेजेस, मारधाड़ के पिक्चर्स, बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीजें, when they start seeing this, that reflects directly indirectly it gets fed into that particular child's mind. ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप महाभारत के अभिमन्यु की भी कथा याद करते हो तो अभिमन्यु भी आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन अभिमन्यु ने दिया था, एंड देन वी नो व्हाट हैपेंड. बट यहाँ पर आपको आपके अभिमन्यु को ठीक करना है. So ladies who are pregnant, try to avoid seeing some flashy images, seeing such serious, क्योंकि होता क्या है, बच्चा यही सारे पैटर्न्स लेके बाहर आता है, and his brain has those memories, and then the child behave in a different way. अब इसको OCD होने का तरीका, एक सिंपल तरीका बताता हूँ. Why OCD happens and most of the parents ignore it. आप 25 साल पहले जाओ, 25-30 साल पहले OCD का परसेंटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था. आज ज्यादा हुआ है. यहाँ पे क्या नहीं, नील नहीं था, there was, but people were not aware कि इसको कहते क्या है. अब यहाँ इसको पे कहते क्या है. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग बोलते थे अगर हमारा बेटा बहुत जिद्दी है, बट OCD मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, आपका बच्चा आता है, मम्मा मम्मा मम्मा, आप क्या करते हो, रुक जा मेरा अभी काम चालू है, तो बाद में आ जा. अब ये छोटा बच्चा है, इसको तो कुछ समझता नहीं है. सपोज 3-4 साल का बच्चा है, ये फिर वहां से निकलेगा, सामने जाएगा, कोई चीज लेगा, उठा के पटकेगा, किचन में जाके और कुछ पटकेगा. हाँ, तो हाँ वो चीजें पटकना शुरू करता है. अब क्या होता है, अब आपका ध्यान जाता है कि ऐसे किचन में जाके तोड़ा है. सो what pattern gets imprinted in this child's mind is कि जब तक मैं कुछ करूँ ना, मुझे ध्यान नहीं मिलेगा. सेकंड पैटर्न, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बच्चे को गोद में कब लेते हैं, जब वो रोने लगता है. तो अब इस बच्चे का पैटर्न बन जाता है कि जब तक मैं टेंट्रम्स ना करूं, जब तक रो ना, तब तक मैं ऐसे नहीं करूंगा, तब तक मुझे प्यार नहीं मिलेगा. तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी अदर पैटर्न्स, बट ये 2 बेसिक पैटर्न जो हैं, फिर ये बच्चा आगे ऐसे ही बढ़ते जाता है, एंड देन दिस बिकम्स हिज बिलीफ दैट अनलेस एंड अंटिल आई शो द टेंट्रम्स आई विल नॉट गेट. और फिर इसको साइकोलॉजी की भाषा में उसको OCD का नाम दिया गया है. बट ऑनेस्टली OCD कैन बी क्योर्ड विद टाइम, और ये कम होता है. 99% it can be cured. 99% it can be cured. But 1% लोगों का नहीं क्योर होगा, जो करना ही नहीं चाहते हैं. इसका मतलब वो करे तो वो क्योर हो जाएगा. बिल्कुल. क्योर मीन्स it will help them to, once they understand that what is the problem and why it is happening, तो ऑटोमेटिकली वो उनके जो कंपल्सिव थॉट्स है वो आने शुरू हो जाते हैं. वो इसलिए होते हैं कंपल्सिव थॉट्स बिकॉज इनसिक्योरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर OCD. जैसे कुछ लोग हाथ धोते हैं कंटिन्यूसली, यस,
So that is when I have done my NLP therapy with them, when I have done hypnotherapy, most of the times हाथ धोने की जो वजह है ना, वो कहीं ना कहीं उनका इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ लव इन द lack of लाइफ, lack लैक of ऑफ love लव. in the life. Okay, हाँ, that also मुझे reflects here. मुझे प्यार नहीं मिलता है, मेरे हाथ गंदे हैं, तो हो सकता है मुझे मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड गले ना लगाए. Hmm. वो उस लेवल Very तक silly, जाके right? Very वेरी silly, na सिली. Vivek? बट कैसा होता है, ये अपने को सीधे लगता है, बट उस इंसान के लिए वो प्यार बहुत मायने रखता है. तो वी कांट अंडर एस्टिमेट दैट पर्सन कि अरे इसको ये क्या It बचकाने means रीजन के that लिए person इसको is हो रहा in pain, going through something continuously. है. That ये भी person is बोल सकते. continuously going through a deep rooted pain हम्म. on the psychological level. पेन हमेशा फिजिकल पेन ही नहीं होता है, हाँ हाँ. इमोशनल पेन, साइकोलॉजिकल पेन. एंड जैसे ही ये पेन आता है, देन ऑल्सो योर एनर्जी लेवल पेन चेंजेस, योर ऑरा चेंजेस. और चेंजेस. एंड जैसे ही आपका ऑरा चेंज होता है, आपके आसपास आने वाले लोग भी चेंज हो जाते हैं. तो हम्म. इसीलिए शुरू में जैसे मैंने कहा कि अवेयरनेस जैसे ही करते हो तो चीज़ें ठीक होती है. तो ओसीडी में भी देखो 5 तरह के ओसीडी होते हैं. इट्स लाइक कंटेमिनेशन, जो आपके हाथ धोने का होता है. फिर दूसरा इंट्रूजन टाइप ऑफ Interest. ओसीडी, जहाँ पे लोगों को किसी को मारने का या किसी को खुद को तकलीफ देने की उसको. तकलीफ होती है. फिर होता है होर्डिंग. होर्डिंग सबसे कॉमन है आजकल. लोग ना विंडो शॉपिंग के नाम पे यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये खरीदो वो खरीदो, घर में बस जमा होर्डिंग. करके रखते हैं. दैट इज ऑल्सो एन ओसीडी. देन कम्स चेकिंग. मैंने गैस तो बंद किया है, मैंने लाइट का स्विच बंद किया है क्या, मेरे बच्चों का क्या हो रहा है, तो मेरे हम बच्चे बोल स्कूल में सकते हैं ना ठीक है कि विवेक नहीं. जी कि कभी कभी कोई कहीं बाहर जा रहा है, लॉक है कि नहीं है, जो 2 बार 3 बार 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 चेक कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ दैट इज दिस. यस, दैट इज ऑल्सो वन वेरएज ऑफ द वी साइन सी ऑफ कि ओसीडी. ये तो ठीक है, नॉर्मल है, हमने सिर्फ डबल चेक किया. डबल चेक करना फिर भी ठीक है, बट इफ यू आर कंटिन्यूसली चेकिंग, हम्म. आपके बच्चे फॉर एग्जांपल कहीं गए, हर 5 मिनट बाद आप आधे घंटे बाद फोन करते हो, हेलीकॉप्टर मॉम जैसे होती है. They try to keep a check on everything. That चेक is ऑन. nothing but it's more of OCD. इनसिक्योर. It's not like आप आपके बच्चे से डेफिनेटली सब लोग प्यार करते हैं अपने बच्चों से, बट यस. इतना ज्यादा जब आपका पैटर्न हो जाता है तो समटाइम्स योर चाइल्ड विल स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर, ही विल स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट, यार मुझे मेरी मम्मी लाइफ नहीं जीने दे रही है. दैट इज ऑल्सो एन ओसीडी. सो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड वेयर टू स्टॉप. फिर उसके बाद आता है रूमिनेशन. तो इस तरह से 5 तरह के ओसीडीज आते हैं. And all the 5 OCDs can be cured or can be controlled to almost 90% extent if the person wants to things. But होता क्यों नहीं है ओसीडी के लोगों को रिजल्ट्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं एक्सेप्टेंस. कि हमको ऐसा कुछ है. ये तो हाँ. नॉर्मल है, जैसा अभी तुमने कहा, ताला 2 बार खींचना तो नॉर्मल है. नॉर्मल है. तो वो नॉर्मल है, हाथ धोना तो नॉर्मल है. नॉर्मल है. ऐसे लोग हैं जो दिन में 5-5 टाइम बेडशीट बदलते हैं. ऐसे लोग हैं जो हाँ. 2-2 घंटे नहाते हैं. यस. यस. तो ये उनके लिए वो नॉर्मल पैटर्न बन गया है, बट एज पर साइकोलॉजी इट इट इज इज नॉट ना. इज नॉट. कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गॉड, एब्सोल्युटली. अगर रिलीजियस इवन मैं भी हूँ, पूजा भी करता हूँ, रोज करता हूँ. बट कुछ लोगों के हिसाब से 2-2 3-3 घंटे जब तक वो पूजा, उनको वो फियर रहता है अंदर से फियर. कि कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए. हम्म. उसको रूमिनेशन कहा जाता है. तो वो कंटिन्यूसली उस मेटाफिजिकल में इतने रह जाते हैं कि वैसे भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि जहाँ पे वो फियर उनको इतना ज़्यादा होता है कि उनको बताना पड़ता है कि नहीं, आप गलत नहीं कर रहे हो, भगवान की पूजा करना गलत नहीं है. उन लोगों हम्म. को वो भी ओसीडी लगता है कि यार मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, कहीं मेरे ओसीडी तो नहीं है. तो ऐसा हम्म. नहीं होता है. विवेक जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, जैसे प्रेगनेंसी में जब दैट्स व्हाई प्रेग्नेंट वुमेन्स आर आस्क्ड टू बी वेरी हैप्पी, एंड उसका भी एक आपने डीप इनसाइट दिया कि उस टाइम पे क्राइम पेट्रोल देखना या कोई भी क्राइम रिलेटेड चीज और एनीथिंग डिस्टर्बिंग, तो क्या ये एक वजह है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एडीएचडी एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स? आजकल गर्भ संस्कार टेक्निक इज गेनिंग वन पॉपुलैरिटी. हाउ यू सी दैट, हाउ विल इट बेनिफिट, या फिर लोगों को वो भी करना चाहिए? हाउ टू यूज दैट, बिकॉज पीपल आर नॉट गर्भ अवेयर ऑफ दिस संस्कार, गर्भ संस्कार टेक्निक. गर्भ संस्कार डेवलप्ड बाय डॉक्टर बालाजी तांबे इन हम्म. लोनावला, मुंबई. यस. यस. इट इज वन ऑफ द अमेजिंग टेक्निक. फाइनली दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिलैक्स. बट फिर अगेन इसका भी अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस नहीं है. गर्भ संस्कार, जब आप पैदा हुई थी, क्या आपकी मम्मी ने गर्भ संस्कार किए थे? नहीं. बट स्टिल यू आर हेल्दी, यू आर डूइंग परफेक्टली इन योर यस. लाइफ, टुडे यू आर टेकिंग द पॉडकास्ट. सो संस्कार, गर्भ संस्कार मतलब क्या? वही जो मैंने कहा कि चौथे जी. 5वें महीने से, वो या उससे पहले से, जैसे कंसीवमेंट होता है,
वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी सोच को जैसे जैसे आप चेंजेस करते हो, चेंज। हम्म। तो चीजें चेंज। गर्भ संस्कार मतलब गर्भ पर होने वाला संस्कार। इसके लिए आपको किसी क्लास लगाने की जरूरत नहीं होती है बहुत बार। हम्म। बट आजकल ये इसीलिए शुरू हुआ है, इट इज हाँ ऑल्सो सर। वन ऑफ द थिंग कि लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम लोगों नहीं के है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों की फैमिलीज न्यूक्लियर हो गए हैं। पुराने जमाने में देयर वाज अ जॉइंट फैमिली, जहाँ पे सास ससुर दादा दादी नाना नानी सब लोग हुआ करते थे। एंड जॉइंट फैमिली होने की वजह से उस प्रेग्नेंट लेडी को थोड़ा टाइम मिलता था खुद टाइम को। मिलता। यस। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में वो टाइम मिलता ही नहीं है। तो वो दे एंड टाइम अप स्टेइंग कैसे अलोन। निकालेंगे? हाँ, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे? आइदर हिप्नोथेरेपी, गर्भ संस्कार, बिकॉज दैट हम्म। इज द नीड ऑफ आवर। नीड ऑफ द उस आवर। समय आपके सपोर्टिंग सिस्टम इतनी ज्यादा थी कि आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी। बट आजकल नीड ऑफ आवर एंड फिर क्या होता है? वीकेंड बैचेस ऑफ हिप्नो गर्भ संस्कार, वीकेंड बैचेस ऑफ हिप्नोथेरेपी। दैट विल नॉट हेल्प। इट डजंट हेल्प एब्सोल्युटली। हिप्नोथेरेपी के भी जब सेशंस अगर प्रेगनेंसी में कोई लेता है, आई हैव क्लाइंट्स वो टेकिंग हिप्नोथेरेपी सेशंस फॉर मी फॉर प्रेगनेंसी, तो उनको वही कहता हूं मैं कि जो अब हमने सेशन लिया है उसके जो रिकॉर्डिंग है वो आपको रोज सुननी है। हम्म। बिकॉज दैट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, यू कांट से प्रोसेस। कि हाँ मैंने एक थेरेपी ले ली अब मेरे 9 महीने निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता नॉट है। लाइक दैट। यस। बिकॉज एवरी डे योर fetus is growing in your womb. So every day it is acquiring new things. So unless and until you are mentally stable, things don't. And गर्भ संस्कार के भी जो टेक्निक्स है सारे बहुत अच्छे हैं, बट हम्म। देन दैट हैज टू बी डन रेगुलरली। ये नहीं कि रेगुलरली। वीकेंड सैटरडे संडे में गर्भ संस्कार करूंगी और बाकी 5 दिन जो है वो ऑफिस का स्ट्रेस लेके बैठूंगी, कुछ नहीं। कुछ नहीं इट्स होगा ऑफ नो उससे। यूज। इट्स अ प्रोसेस विच हैज टू बी डन। So those who are looking for this, please, wherever you are registered for any Garbha Sanskar Kendra, it is important for you to do it daily, practice it daily. डेली। Mindfulness is very important. हम्म। थैंक यू विवेक जी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स विच इज हैपनिंग अराउंड अस टुडे। थैंक यू फॉर शोइंग द इनसाइट्स ऑन दिस। जैसे हमारी लाइफ में कुछ आने वाला होता है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट कोई वास्तु एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की तरफ आता है, उनको लगता है हम अपना फ्यूचर जान सकते हैं। दैट इज ऑल्सो बिग मिसकंसेप्शन। एंड जस्ट एज यू आर एन एक्सपर्ट इन मेडिकल न्यूमरोलॉजी, I want you to share some insights about how medical numerology can help people of something which we can sense through their numbers and name that future में ऐसा हो सकता है. And I myself have seen when we suggest something like that, people get scared कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा. So how One do you say important, that? one important and a bold statement which I would make, and I always say it in my class on the first day itself. The patient never dies because of diagnosis, he dies because of the prognosis. Yes. Again, I would say, जिसको लिखना है प्लीज लिख लीजिए, and it can help you. A patient never dies because of diagnosis, he dies because of the prognosis. So now coming to your question, कि वास्तु एक्सपर्ट, मेडिक, Numerology. एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी, when they try to say something, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक मैं भी थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी करता हूँ, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो क्या एब्सोल्युटली आई एम नॉट एन विवेक जी आप एक्सपर्ट। मजाक कर रहे हैं थोड़ी नहीं, बात? यू आर एन एक्सपर्ट इन दीज साइंसेस. एक्सपर्ट उसको कहा जाता है, उसको जो ऊपर बैठा हुआ है। हम लोग सिर्फ चैनल है, हम लोग सिर्फ मीडिएटर्स हैं। फॉर अस एक्सपर्ट कब कहेंगे पता है? आज दुनिया में जितना, या इंडिया का ही पॉपुलेशन ले लो, 140 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है। इफ आई एम एबल टू एनालाइज ऑल दोज 140 करोड़ पीपल एब्सोल्युटली इन द प्रॉपर वे, देन आई कैन बी एटलीस्ट 10% एक्सपर्ट। एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की भाषा अलग यस. होती है, हर इंसान की सोच अलग होती है। नॉलेज तो अलग होती. आपका जो क्वेश्चन होता है कि आपका जो क्वेश्चन था कि ये बिलीफ कि ये होगा वो होगा ऐसे होगा, तो इसको मैं बहुत आसान तरीके से बताना बिकॉज यहाँ चाहूंगा। पे मैं ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, जब हम सी नोबडी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, जब हमें कुछ दिख रहा है कि ये हेल्थ इश्यू हो सकता है, वो हम अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि जब वो हो या ना हो, बट वी आर बेटर प्रिपेयर्ड इन दैट केस टू एब्सोल्युटली। टेक दैट अब इसको डायग्नोसिस. एग्जांपल के तौर पे देता हूँ मैं, कि सपोज आप एक हाईवे पे जा रहे हो, वहां पर आपको
घाट आने से पहले ही 1 किलोमीटर पे बोर्ड होता है, घाट अहेड। 500 मीटर्स पे भी एक बोर्ड होता है, वहां पे स्लोप भी दिखाई देते कि अपवर्ड राइजिंग स्लोप है। मीन्स यू आर, आपका जो फिफ्थ गियर में जो व्हीकल है आप उसको स्लो डाउन करते हो। सो इफ यू टेक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एज एन गाइडेड एस्पेक्ट, it can help you to maneuver through the tough waters easily. For example, जैसे वास्तु में भी कहते हैं, एंड इट्स अ प्रूवन साइंस की, बहुत देखा गया है बहुत सारे सैंपल के, Yes. अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो प्रोबेबली यू माइट सी सम हेल्थ इशू। Yes. अब It is proved. Yes. इट इज Because प्रूवन, इट्स yes. प्रूवन। बट देन अगर किसी के घर पे है ही, सपोज कोई रहता ही 1 BHK में है और उसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, यू कांट आस्क दैट पर्सन टू ब्रेक दैट टॉयलेट। वो Yes. आजकल के अपार्टमेंट सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं है। Yes. तो वहां पर उस इंसान को अगर आप सही तरीके से गाइडेंस देते हो, इफ यू Guidance. प्रिपेयर दैट पर्सन मेंटली दैट यस दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन पॉसिबल, सो दैट अ पर्सन इज मेंटली प्रिपेयर टू हैंडल द थिंग्स। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं बहुत बार। वास्तु एक्सपर्ट्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, यू आर एन अमेजिंग वास्तु एक्सपर्ट, बहुत से लोग डरा देते हैं सामने वाले को, आपके लाइफ में ये होगा वो होगा वो होगा कहने वाले हम भगवान नहीं है। नहीं होता। जी। होने के चांसेस हैं, Chances. सो बी प्रिपेयर्ड। एंड बी प्रिपेयर्ड कहना भी गलत होता है। ट्राई टू वर्क Be आउट ऑन योर cautious. लाइफस्टाइल, हाँ बी हम ऐसे बोल कॉशियस। सकते, be हाँ, cautious. ट्राई टू वर्क आउट ऑन योर लाइफस्टाइल, ट्राई टू कीप योर फंड्स सेपरेटली, ऑलवेज हम्म, बी रेडी फॉर सम फंड्स। हम्म, इस तरह से जब आप कहते हो तो चीजें बहुत बहुत आसान हो जाती है। सो इसलिए कहा कि पेशेंट नेवर डाइज बिकॉज ऑफ द डायग्नोसिस, ही डाइज बिकॉज ऑफ द प्रोग्नोसिस। चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, आप सभी को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, दैट नेवर गिव अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कि हाँ तेरे साथ ये होगा। नो, वी आर नॉट गॉड, we are not good. एटलीस्ट Yes. आई एम नॉट गॉड। एंड वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि प्रेडिक्ट करो, बिकॉज मिरेकल्स ऑलवेज हैपन। Yes. मैथ्स में हमेशा प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाती है, प्रोबेबिलिटी में भी वही सिखाया जाता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं। सो वी एज न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, इट इज इम्पोर्टेंट टू ओनली गिव दैट चांसेस कि हाँ ये होने के चांस है, होगा ही ऐसा कहना गलत है। हाँ, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो 100% कहते हैं, आई विल नॉट चैलेंज देम, दैट इज Hmm. देयर नॉलेज। बट देन द पेशेंट, अगेन पेशेंट नेवर डाइज बिकॉज ऑफ डायग्नोसिस, ही डाइज बिकॉज ऑफ द Yes. प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस कभी भी मत कीजिए, अगर करना है प्रोग्नोसिस तो अच्छा कीजिए कि किसी की बिलीफ सिस्टम बिल्डअप हो जाए। Hmm. Thank you for this insight, Vivekji. With these insights, I want to ask, you are a father of twins also. How does that keep you busy? A very amazing question. I was working with one of the best semiconductor companies in the world, and I am very proud of it. I did my amazing career. 2010 में जब twins deliver हुए, thanks to my company also. सबसे पहले तो पहले के 3-4 महीने हमारे लिए बहुत टफ हुए, क्योंकि जब बेटा, लाइक ट्विंस वर बॉर्न प्री मैच्योर थे। 3 महीने मेरा बेटा आईसीयू में था, एनआईसीयू में, एंड वी हैड टू गिव हिम 33 बॉटल्स ऑफ ब्लड। उन 3 महीनों में भी माई कंपनी हैड गिवन मी अ बेनिफिट कि आप ऑफिस नहीं आए तो भी चलेगा, आप रात को मेल चेक कर दो एंड रात को रिप्लाई दो मेल्स, बस रिप्लाई कर दो। इवन माई बॉस वॉज क्वाइट सपोर्टिव फॉर मी। अब पीपल जनरली, लोग बोलते हैं कि पीपल चेंज देयर जॉब्स, पीपल चेंज Hmm. देयर बॉसेस, बट माई बॉस वॉज वेरी गुड। उसके बाद I got an option to work from home because my wife was also working. She is still He is working. also an artist. I Yes, want to she's an acknowledge amazing that artist. also. He's an Yes, she's an amazing amazing artist. artist. And she's also working with one of the leading software companies at a very senior level. Past 26 years, she's working with the same Yes. organization. आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते हैं कि, क्योंकि 2 साल बाद तो लोग जॉब चेंज करते हैं। She is with this company past 26 years. So Amazing. having twins, I personally chose to take an which can give me work from home option. So I chose to come home. वर्क फ्रॉम होम का जैसे ही ऑप्शन लिया, आई कुड गिव गुड टाइम फॉर माई किड्स, आई कुड बैलेंस माई वर्क एंड लाइफ बोथ। सबके लिए वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन पॉसिबल नहीं होता है, बट फॉर मी, बाय गॉड्स ग्रेस, इट वॉज पॉसिबल कि वर्क फ्रॉम होम लिया। जितना पॉसिबल हो वाइफ को भी हेल्प करो, बिकॉज फाइनली इवन शी वॉज
doing her job. तो दोनों ने मिलके जब उस चीज को बैलेंस किया, तो वी यूज टू लाइक इवन टेक टर्न बाय टर्न्स कि हाँ, रात को इसको 2 बजे दूध देना है, तुम 2 घंटे तुम सो जाओ, बॉटल मैं बना के दूंगा. एट दैट लेवल वी हैव डन दिस एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स मतलब this is the part and parcel of life. You can call it as adjustment. This is your Yes, duty. which This you have every to do it. parent does, which Which every has to do parent. it. Every parent has to be done. But यहाँ पे आपको वो मी टाइम स्पेंड करना एंड एंजॉय करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी कि मेरी सर्जरी से पहले ही 3-4 साल That's जो what थे I बच्चों के wanted लिए, to ask, because your kids सर्जरी से twins पहले तीन were चार साल born in हाँ 2010 और आपके साथ 2010 इंसिडेंट हुआ 2013 2013. में. तो पहले 3-4 साल तो इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी कि आई एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट आफ्टर देम. एंड उसके बाद भी when they started walking, 3-4 साल के होने के बाद, मेरी सर्जरी होने के बाद, आई हैड एन गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क फ्रॉम होम. तो जैसे ऑफिस का टाइम खत्म होता था, वो अपना पूरा नेक बेल्ट वगैरह सब, बड़ा वाला नेक बेल्ट था मेरा, वो सब लगा के मैं दोनों बच्चों को नीचे घुमा के लेके जाता था घुमाने. तो इन आवर सोसाइटी ऑल्सो देयर वर फीमेल्स, बाकी पेरेंट्स थे, उनके मम्मियाँ, आप आते हो सब कुछ छोड़ के, तो दे यूज टू फील कि यार फादर कितना करता है. बट माई वाइफ यूज टू डू एवरीथिंग फॉर द किड्स व्हेन दे आर एट होम. तो मैं उनको बाहर ले जाता था, बहुत मस्ती करते थे हम लोग. वी एंजॉयड देयर चाइल्डहुड लाइक एनीथिंग, एंड वी ट्राई टू एंजॉय इवन नाउ. नाउ दे आर ग्रोन अप, दे आर God 13 प्लस, एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ. तो bless them, ट्विन sir. प्रेगनेंसी, Hmm. सिंगल पेरेंट, मतलब आप अगर एक भी चाइल्ड है, ट्विंस हैं, 2 बच्चे हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एंजॉय द मोमेंट. क्योंकि ये मोमेंट्स वापस नहीं आते हैं. एक बार आपका बच्चा बड़ा हो गया तो वापस वो छोटा नहीं होने वाला है. एंजॉय दैट थिंग एंड लाइफ बिकम्स इजी, क्योंकि ये मेमोरीज ही आपको आगे आसानी से आगे बढ़ाती है. लाइक वो मोबाइल पे फोटो देख के, अरे मेरा बच्चा छोटा था, कितना ब्यूटीफुल था, कितना क्यूट था, उससे ज्यादा खुशी आपको इससे मिलेगी कि आपने वो टाइम उसके साथ स्पेंड किया हुआ है, एंड यू कैन चेरिश दैट मेमोरी विच इज देयर इन द ब्रेन. Hmm. दैट वर्क्स बेटर. So I am proud father of twins, thanks to my wife, who has also been supporting in my journey always. At the end of the day, Vivek ji, it is the family which is the pillar of strength for everybody, Yes, which during the struggles we don't realize, but they are the pillar of the strength. No matter absolutely, what challenges may come, they are the ones who are with us always. absolutely, absolutely. And I've seen very less people who have a gratitude like you for the biggest challenge they have come across. Like you said, you had this neck surgery, and how difficult it is that you cannot turn sides or take Hmm. sides and sleep. It is challenging. But still, the kind of gratitude you have for your life, very less people will have. I'll not call myself great, but yes, I try to practice gratitude, because unless and until मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था ना, मेरे पिताजी ने मुझे एक स्टेटमेंट कहा था उस जमाने में, 1989 में. I always complained that I had no shoes until I saw a man who had no legs. Yes. एंड ये स्टेटमेंट मेरी लाइफ में हमेशा के लिए रहा है. सेकंड बिगेस्ट स्टेटमेंट विच आई हैव रेड व्हेन आई वाज इनटू माय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इंडिया का एक बड़ा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के मेन गेट पर ही लिखा हुआ है, एंड दिस स्टेटमेंट एवरीवन शुड इम्प्रिंट इन देयर माइंड, इट वर्क्स मिराकुलसली. द ग्रेवयार्ड्स इन द वर्ल्ड आर फिल्ड विद पीपल who always thought they are irreplaceable. ये स्टेटमेंट मैंने हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखा है. तो आई कैनॉट बी, मैं ही मैं हूं नहीं, मेरे जैसे हजारों लोग आज कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं. सो ट्राई टू लिव द मोमेंट, ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर थिंग्स वी आर डूइंग. चीजें चेंज हो जाती है, Yes. बट सब हम नहीं है. जो करता करता है वो ऊपर है, वो ऊपर से जो कराएगा वो हम हमें करेंगे. कोशिश करनी, यस, हम कोशिश सिर्फ करते कोशिश रहे. कर सकते हैं. यस. And this, as to continue where we left just before the family things we started, like how medical numerology, जैसे किसी का नाम है या किसी का date of birth है, what type of diseases can be diagnosed by date of birth and name? Because इसका भी awareness नहीं है that what kind of diseases we can give the precautions, or um, we can intimate them before. Is it possible? 90% of the times, yes, it is possible. Hmm. Reason being, every number vibrates at a particular frequency.
Every alphabet vibrates at a particular frequency. So when these combinations come together, Mm. they automatically, like when I'm calling your name Krishnaveni, so it is vibrating at a particular frequency. So that Yes. frequency also affects our body. Secondly, the combinations of the name, what alphabets you are placing, how many times that alphabet is being placed, that also matters. Then also when it comes to your date of birth, yes, date of birth, if we decode it in the right way, it can help. So the combination of date of birth and name combined, it works miracles. Like मैंने भी भगवान की कृपा से I have published one paper on weight gain and numerology, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1,500 सैंपल्स किए थे, उसमें से 150 सैंपल सबमिट करके हाउ द कॉम्बिनेशन अफेक्ट्स 80-20, 80% ऑफ द टाइम्स इट वर्क्स, क्योंकि हमेशा 80-20 प्रोबेबिलिटी ही सब जगह चलती है. Chal. So the Yes. people who have, like for example, the combination of SH in the name, Hmm. शुरू में, बीच में, लास्ट में, they have a tendency of weight gain. If they don't take care of their health, immediately weight gain हो सकता है, whether it's male or whether it's female. S अगर नाम में है तो वो मल्टीपल एस अगर नाम में है तो भी वो वेट गेन दे सकता है. देयर आर वेरियस वेज टू डिकोड इट, बट Don't you यहाँ पे think, आप Vivek sir, आजकल unaware of these facts that letters can also trigger medical issues? People just yes, go yes. blindly for the name corrections and add multiple letters unknowingly. One of the biggest disaster which people do is name correction. First and the most important thing as a numerologist, it would be my honest opinion, मैंने भी अपना नेम चेंज किया है, एक स्पेलिंग करेक्ट किया, नेम चेंज मतलब एक स्पेलिंग चेंज किया है, बट ये तभी करना चाहिए when you see that yes there is some major challenge. Major. Yes. वरना शांत पानी में कभी कंकर डालने की कोशिश मत कीजिए. इट्स गोइंग टू Perfect example. बैकफायर. हाँ, इट्स Perfect गोइंग टू example. बैकफायर. न्यूमरोलॉजी में मेरे पास भी, लाइक व्हेन आई डू पर्सनल कंसल्टेंसीज, लोग आते हैं बीच में. तो मेरे पास अभी जस्ट 8 दिन पहले की बात है, 2017 बॉर्न एक लड़की के लिए लोग, उसके मम्मी डैडी आए कि हमारी बेटी का नाम चेंज क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड है. मतलब अच्छा खासा नाम है, क्यों इसको चेंज कर रहे हो. तो नेम, एंड सेकेंडली नेम करेक्शन शुड बी द लास्ट ऑप्शन. द वे सर्जन सेज कि सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन. Last option. Yes. आपका जो है वही नाम है ना, ये आपको बहुत से प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाल सकता है. unless and until there is a major medical challenge, unless and until there is a major financial challenge, don't go for name correction. Instead of that, work on the traits of the existing name, use that capacity and inbuild your own capability with that. And trust me, जब पिछले जिंदगी के 40 साल, 50 साल, 20 साल जितने भी आपने निकाले उतने निकाले, तो आगे भी निकल जाएंगे. विवेक अगर जी, मेजर जैसे आपने चैलेंजेस यहाँ नहीं, पे बोला कि हाँ, don't change any corrections, don't do any name corrections, unless not it is even needed. unless it is needed, not even name corrections. When people blindly go for name change, what do you have to say about this? Okay, I'll call it this way. एक सिटी का नाम एग्जिस्टिंग कुछ अच्छा खासा नाम है, उसको आप टोटल नए नाम से बुलाते हो. टोटल वाइब्रेशन चेंजेस. फॉर एग्जांपल, कल अगर मैं कृष्णावेणी को बुलाता हूँ सावित्री, तो वो वाइब्रेशन मैच ही नहीं होगा अनलेस एंड अंटिल यू आर रेडी ऑन द सबकॉन्शियस लेवल टू एक्सेप्ट दैट नेम. बस किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने मुझे नाम दिया है कि अगर नहीं विवेक की जगह तू मुकेश लिख ले, तो माय सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. एंड इफ इट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, मुझे उसका 1% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो गिविंग अ टोटल न्यू नेम इज ओनली नीडेड इन फ्यू केसेस, जहां पर आपको मेजर चेंज चाहिए पर्सनालिटी में, एंड वो सामने वाला उसके लिए तैयार हो, क्योंकि वो साउंड की फ्रीक्वेंसी उस पर इम्पैक्ट करेगी. Yes. सपोज आपका छोटा बच्चा है, आप उसको किसी नाम से बुलाते हो, 2-3 साल का बच्चा है, आप उसको किसी नाम से बुलाते हो, और अगर वो सपोज रेगुलर रोने वाला बच्चा है, ट्राई टू कॉल दैट चाइल्ड बाय डिफरेंट नेम, अ वेरी गुड वाइब्रेशन, चांसेस आर वेरी ब्राइट कि उसका चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा. Yes. क्योंकि वो वाइब्रेशंस मैटर करते हैं. तो आपको नेम करेक्शन या टोटल नया नाम तभी देना चाहिए when you want to shift the entire personality. एंड इसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप नया नाम देते हो तो उसमें भी
one thing I would definitely tell everyone, of course, that's a big time subject, but आपके नए नाम में भी आपका पहले वाला जो नाम था उसके फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट नहीं होने चाहिए. First and last Because one. your first and last alphabet defines your life. Yes. Your last Yes. alphabet is the cause and first alphabet is the reaction. Is the reaction. Yes. तो वो अगर आप चेंज करते हो तो 99% of the times you don't need to give a new name. This is the few numerologists practice this particular way. कि जरूरत ही नहीं पड़ती है नए नाम की, आपको बस उसके कॉज पे काम करना है, रिएक्शन सामने से आते हैं. तो नेम करेक्शन शुड बी द लास्ट ऑप्शन. डोंट एक्सरसाइज इट कि बस क्योंकि आजकल तो मतलब Then why is this happening, विवेक जी, कि मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, मेरे लाइफ में ये ठीक नहीं है, रिलेशन ठीक नहीं है, मेरे फाइनेंसेस ठीक नहीं है, मैं नेम चेंज कर लेता हूँ. दिस इज द कॉमन परसेप्शन व्हिच वी कम अक्रॉस. इज इट इम्पेशेंस? दिस इज द कॉमन परसेप्शन हैपनिंग बिकॉज दो चीजें. सोशल मीडिया इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सेकेंडली, द वे इट इज बीइंग मार्केटेड. आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, कहीं आप जैसे स्टेप अप आपने तो नहीं स्टार्टिंग हो. में कहा, हिप्नोसिस जो हम मूवीज में देखते हैं, हाँ, हम उसी को हिप्नोसिस समझते उसी हैं. को. हाँ, तो दिस इज ऑल्सो हिप्नोटिक. अगर आपकी लाइफ में आप यहाँ पे अड़े हुए, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन ठीक नहीं है, तो जरूरत है आज आपको आपका नाम करेक्शन करने की. दिस इज अ हिप्नोटिक कमांड. Yes. सो इट शुड बी अवॉइडेड. एंड आप 20 साल पहले जाओ ना, तभी लोगों को नेम चेंज का कुछ ज्यादा था क्या? नेम चेंज वॉज वर्किंग एट दैट टाइम ऑल्सो. बट अभी क्या हुआ है, योर क्वेश्चन कमिंग टू द कि ये ट्रेंड क्यों आया है. ट्रेंड इसीलिए आया है कि हर एक के पास मोबाइल है, कंटिन्यूअसली बस वो है बॉम्बार्डिंग कंज्यूमिंग. हो रहा है. हाँ, बॉम्बार्डिंग. कंज्यूमिंग से भी ज्यादा बॉम्बार्डिंग हो रहा है. तो पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग अ बिलीव कि अरे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं करके देखता हूँ. अरे नेम चेंज करने से पहले खुद के अंदर झांक के देखो, सेल्फ अवेयरनेस करके देखो दैट व्हाई इट वाज नीडेड. व्हाई इट वाज नीड. मैंने भी अपना खुद का नेम चेंज किया, बट बहुत सोच समझ के किया कि व्हाई इट वाज व्हाई नीडेड. इट वाज नेसेसरी. देयर आर मेडिकल पॉसिबिलिटीज, व्हाट कैन हैपन, व्हाट कांट हैपन. बट रेगुलर लाइफ में सिर्फ मेरे रिलेशनशिप थोड़ी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, मेरे जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए अरे वहां पे काम करने से अच्छा खुद के इनसाइट्स पे खुद के काम करो. इनसाइट्स पे काम चेंज करो. द यस. पर्सनालिटी, थिंग्स विल चेंज इमीडिएटली. यस. तो दिस इज माय पर्सपेक्टिव. यही मैं अपने क्लासेस में भी सिखाता हूँ, यही मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि नेम करेक्शन शुड बी द लास्ट ऑप्शन. यस. यस. एंड फाइनली Wonderful. This was क्लिनिकल one of the हिप्नोथेरेपिस्ट. major things needed, sir. One of the major insights needed for the awareness. Secondly, कैसा है, finally being a clinical hypnotherapist and a certified NLP trainer, it is also my due responsibility to make it clear कि आपका subconscious mind बहुत powerful होता है. So you should always try to give a positive belief, whether a person is coming for health issues, relationship issues, or whatever. And secondly, with due respect to all the numerologists, astrologists, and everyone, a good numerologist, a good Vastu consultant, a good astrologer should be a good counselor first. Yes. Yes. You can't be a good professional expert in your field unless and until you understand the human mind. Yes. Or else it's going to backfire, not to you, but to that person who has come to you, because they Yes. seek you next to the God. तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके साथ जेल हो जाओ एंड ट्राई टू गिव देम द Counseling. ऑनेस्ट ओपिनियन. अच्छा Counseling. काउंसलिंग. एंड काउंसलिंग भी ये नहीं कि बस कोई किताब पढ़ ली एंड काउंसलिंग कर दिया. ऑफिशियली try to understand, try to learn counseling from various therapists, try to learn NLP, try to learn hypnosis, because Hypnosis. unless and until you are able to speak the client's language, you are not going to deliver them. 10 clients कम किए तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता. एक ही क्लाइंट करो बट उसकी लाइफ में चेंज लेके आओ. Yes. दैट विल, उसको भी सुख की नींद मिलेगी, तुमको भी चैन की नींद मिलेगी. Vivek, that is the common thing for the occultists like hypnotherapists, NLP, Vastu, astrology, numerology. इन सबका बेस ही वही है, to bring change in somebody's life. It's a service to the people. But very few people have practiced it. Most of them want to create a change in their life क्योंकि इनको अपने सर्विसेज के साथ बाकी के सर्विसेज बेचनी होती हैं. So like for example, my life changed because I accepted these sciences due to some challenges.
I saw changes in my life, then I thought it should be spread to other people. That's how I started. तो अपनी लाइफ में चेंजेस लाना सोचना इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट उसको हमें आगे लोगों तक पहुंचाना, वो इंटेंशन कहाँ रुक जाता है। अपनी लाइफ में चेंजेस लाना सबसे इम्पोर्टेंट है, बट अपनी लाइफ में चेंजेस से भी ज्यादा लोगों का जो फाइनेंशियल मोटिव आता है सबसे पहले, तो वहां पर वो जो भावना होती है, ऑकल्ट साइंस इज ऑल अबाउट गिविंग। गिविंग, यस। जितना आप ज्यादा दोगे उससे 10 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। नेपोलियन हिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लॉज ऑफ सक्सेस नाम की एक उनकी किताब है, यस। हार्डली 1,500 के पेज की बुक है। उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया है, जिसको मैं हिंदी में बताऊंगा कि जितना लाइक इंग्लिश में, ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर मोर देन व्हाट यू आर बीइंग पेड फॉर, इट विल चेंज योर लाइफ। हम्म। तो ऑकल्टिस्ट है, कोई भी है, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ मैं, कोई भी, अगर आप जो भी फीस लेते हो उससे थोड़ा ज्यादा ही देने की कोशिश करो। यस। बट अगर ये मोटिव रखते हो कि मैंने इतनी फीस ली है, अब तो मैं इससे बाकी मेरे जो हिडन सारी चीजें हैं, कि कभी पिरामिड है, कभी ये है, कभी वो है, कभी मैं अपना ये बेचूंगा। वो शॉपिंग फेस्टिवल के बहुत से लोगों ने, वेरी सॉरी बट कुछ लोगों ने उसको शॉपिंग फेस्टिवल की तरह बना के रखा है, वहां पे रिजल्ट नहीं आते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू डिलीवर देम दैट व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। बट दिक्कत ये भी होती है कृष्णवेणी जी की, कुछ क्लाइंट्स को भी शॉपिंग फेस्टिवल ही पसंद होता है। हाँ तो जैसे जी। नीड, जैसा वैसे डिमांड, वैसा सप्लाई, ये भी लॉ ऑफ नेचर लॉ है। ऑफ नेचर। सो यस। वी कांट अवॉइड दैट ऑल्सो। बट occult is an amazing field if we use it diligently for benefit of society। आपकी 7 पुश्तें ठीक हो जाएंगी। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वी ऑल occultists, जो भी इस फील्ड में न्यू है, ओल्ड है, जो भी है, our responsibility to create awareness. Like today we talked about hypnosis, we talked about OCD, we talked about Garbha Sanskar, we touched upon so many topics today which are not being educated to people in a right way. So आगे से I look forward to do more sessions so that I can bring more people to create this awareness for which I started this platform. So Absolutely. In fact, Krishnaveni, you are doing an amazing job. Also, thank you. I am proud of you as a student, as my student, कि आपने मेडिकल Thank you. न्यूमरोलॉजी भी की है मेरे साथ। Jesus. I adore your knowledge for वास्तु, अमेजिंग नॉलेज तुमको है। कंटिन्यू दैट मोमेंटम, स्टार्ट स्प्रेडिंग द नॉलेज एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, नॉलेज से भी ज्यादा Awareness. अवेयरनेस। नॉलेज इज योर प्रोफेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इट, बट अवेयरनेस जैसे ही स्प्रेड करोगे, automatically things will start growing. Your podcast is doing amazing. You have invited all the brilliant people. मेरे से पहले बहुत अच्छे लोग आके गए हैं। Thank you, मैं Vivek वन ji. परसेंट लोग, मैं तो उनमें भी 1% भी नहीं हूँ। वो जो गाना है ना, मुझसे बेहतर सुनने Sir, वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, वो सब आ चुके हैं। तो sir, आई I वॉज नॉट am इवन वन blessed. परसेंट Whomsoever I've approached for this platform, everybody has come with an open heart and shared their views. So I am really blessed to know all people. एंड इवन आगे आने वाले सारे पॉडकास्ट के जितने भी सारे लोग होंगे, मैं जानता हूँ कि मेरे से वो बहुत अच्छे हैं, मेरे से बहुत अच्छी बात कर पाएंगे, मेरे से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनके पास। तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि हैव अ ग्रेट लाइफ, ऑलवेज बी ब्लेस्ड ऑलवेज। Thank you, Vivek ji, for sharing wonderful insights, because this is the need of an hour. What we are trying to create is an awareness to the people. Thank you for being a part of this awareness series. I thank you for coming to my show. थैंक यू।